Hello everyone. In this lecture, we are going to start next module, which is Canal Headworks and Distribution System for Water Resource Engineering 2. Now here we are going to start with the classification of canal. Okay. Now as we have already studied what is the canal. ओके कैनाल क्या होता है? जो भी रिजर्वायर से हम लोग डाइवर्ट करते हैं, जो भी पाथ देते हैं हम लोग वाटर को टू इरिगेट सम एरिया, दैट इज योर कैनाल. ओके. नाउ दैट कैनाल इज क्लासिफाइड into several types. Now the classification is, as I have already explained, a canal is an artificial channel, generally trapezoidal in shape, constructed on the ground to carry water to the fields either from the river or from the tank or reservoir. ओके. मतलब रिजर्वायर, टैंक या फिर रिवर से जो भी वाटर कैरी कर रहा है, ट्रेपेजोइडल शेप का होता है जनरली कैनाल, एंड वाटर कैरी करता है टू फ्रॉम द रिवर टू द इरिगेशन फील्ड. ओके. नाउ द कैनाल्स में बी क्लासिफाइड in the several ways. First is classification based on the nature of source of supply. Okay, classification based on the nature of source of supply. First is your permanent canal, second is inundation canal. ओके. अभी जो भी उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है उसके वो तो हुआ आपका सोर्स. ओके. जहाँ से भी वाटर हम लोग ला रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं रिवर में से या फिर रिजर्वायर में से, वो जो सोर्स है रिवर या फिर रिजर्वायर, आपका क्या हुआ? सोर्स हुआ. ओके. उस सोर्स का जो भी नेचर है उसके हिसाब से हम लोग क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, as a permanent canal or a inundation canal. Okay, these names indicates that the what is the nature of that source of water. Okay, permanent canal में क्या होगा? Canal is said to be permanent when it is fed by a permanent source of supply. ओके. परमानेंट कब कहेंगे हम लोग? जब जो सोर्स है वाटर का, दैट सोर्स, व्हेन दैट सोर्स इज परमानेंट, देन द कैनाल इज सेड टू बी permanent canal. Okay, the canal, permanent canal is a well made up of regular graded channel. Okay, it has also permanent masonry work for regulation and distribution of supplies. A permanent canal is also known as perennial canal when the source from which canal takes is an ice fed perennial river. ओके. दैट मीन्स परमानेंट क्या होगा कि जो हमारा पूरा जो साल है, थ्रू आउट द ईयर दैट कैनाल इज फुल ऑफ वाटर. Okay, throughout the year the canal is full of water, then that canal is said to be a permanent canal. Okay, now inundation canal means, inundation canal is usually drawn their supplies from rivers whenever there is a high stage in the river. मतलब जब भी उस वाटर में, सॉरी, जब भी उस रिवर में हाई वाटर स्टेज होगा, तभी क्या होगा? वो कैनाल फ्लो करेगा. ओके. दे आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी हेडवर्क्स फॉर डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर टू द कैनाल. ओके. उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डाइवर्जन प्रोवाइड नहीं करते. ओके, डाइवर्जन हेडवर्क्स जो होते हैं टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम रिवर, दैट डाइवर्जन हेडवर्क इज नॉट प्रोवाइडेड in the inundation canals. Okay, so they are provided with the canal head regulators.
ओके, दे आर प्रोवाइडेड विद द कैनाल हेड रेगुलेटर्स। दैट मीन्स कैनाल का जो सप्लाई है वो रेगुलेट रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटर्स होते हैं, वो रेगुलेटर्स हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इन्यूंडेशन कैनाल पे। वहाँ पे डाइवर्जन हेडवर्क्स नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है, क्योंकि जो भी वाटर आएगा वो वाटर जब भी हाई वाटर स्टेज होगा तब फ्लो होगा। ओके, now the head of the canal has to be changed sometimes to suit the changing pattern of the river course. Okay, ये तो हुआ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। ओके, जो भी आपका सोर्स है, वाटर का सोर्स है, उसके नेचर के मुताबिक ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ। ओके, द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज द classification based on financial output. Okay, now uh, in this head there are two types. First is productive canal and second is protective canal. Okay, now first is productive canal. What is productive canal? Those which yield a net revenue to the nation after full development of irrigation in the area. Okay, and productive canal is a sort of relief work constructed with the idea of protecting a particular area from famine. ओके, प्रोडक्टिव कैनाल क्या होता है कि प्रोडक्टिव कैनाल जो है वो आपका आपके पूरे कंट्री का या फिर पूरे एरिया का जो नेट रेवेन्यू है वो जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, दैट मीन्स we can produce some yield from by using the water from that canal. Okay, that canal is known as productive canal. Okay, that canal is built for the means of productivity. Okay, that means under that canal the irrigable area will be more productive. Okay, so that we can generate more yield from the irrigation area. नाउ द प्रोटेक्टिव कैनाल क्या है कि जहाँ पे भी फमाइन आ रहा है उस उसको बचाने के लिए, फमाइन से बचाने के लिए हम लोग जो भी कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट कैनाल इज नोन एज योर प्रोटेक्टिव कैनाल। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ कैनाल। अभी दो क्लासिफिकेशन हो गए। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई, सेकंड इज फिनेंशियल आउटपुट एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ दैट कैनाल। फर्स्ट इज इरिगेशन कैनाल, कैरियर कैनाल, फीडर कैनाल, नेविगेशन कैनाल एंड योर पावर कैनाल। ओके, ये जो यहाँ पे टैग्स है, द नेम indicates what will be the function of that particular canal. Okay, now first is your irrigation canal. इरिगेशन कैनाल क्या करेगा, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि वो किस फंक्शन के लिए बनाया गया होगा। इरिगेशन कैनाल कैरीज द वाटर टू एग्रीकल्चरल फील्ड। ओके, इरिगेशन कैनाल क्या करेगा कि इरिगेशन जो भी पर्पस है, इरिगेशन का पर्पस है वो फुलफिल करेगा। ठीक है, नाउ द सेकंड इज कैरियर कैनाल। Carrier canal means it carries water from another canal to do the irrigation. Okay, irrigation canal क्या है कि वो एक कैनाल से दूसरे कैनाल में वाटर ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, जो भी इरिगेशन कैनाल होगा उस इरिगेशन कैनाल में से सपोज एक इरिगेशन कैनाल है एंड ऑन द अदर साइड देयर इज ए अनदर इरिगेशन कैनाल टू transfer water from one canal to another canal. Irrigation canal, carrier canal carries the water from one end to another end. Okay, second is feeder canal.
feeder canal is constructed with the idea of feeding two or more canals. ओके, अभी ये क्या करता है, फीडर कैनाल फीड करता है कैनाल्स को, दूसरे कैनाल्स को, जो भी कैरियर कैनाल होगा या फिर इरिगेशन कैनाल होगा, उस उन कैनाल्स को फीडर कैनाल फीड करता है। ओके, तो दो और उससे ज़्यादा कैनाल्स को वाटर फीड करने वाला कैनाल क्या हुआ आपका, फीडर कैनाल हुआ। तो जो कैरियर कैनाल है उसका एग्जांपल है आपका अपर चेनाब कैनाल ऑन दी वेस्ट पंजाब, एंड दी कैनाल एग्जांपल फॉर फीडर कैनाल इज राजस्थान फीडर कैनाल एंड श्रीहिंद फीडर कैनाल। ओके, नाउ द सेकंड इज second classification is classification based on the boundary surface of the canal। अभी जो फीडर कैनाल है, नेविगेशन कैनाल एंड पावर कैनाल, ये भी सेम ही हुआ। नेविगेशन कैनाल क्या होगा कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन, ओके, एंड द पावर कैनाल विल बी the uh, the canal which carries the water from the power plants, okay, hydroelectric power plants, which the water which carries from the hydroelectric power plants, that canal is called as your power canal. Now the fourth classification is classification based on boundary surface of the canal। ओके, ना बाउंड्री सरफेस जो भी होगी आपकी कैनाल की, उसके हिसाब से जो हो गया। अभी ये कैनाल्स के जो टाइप है, ये कैनाल्स के टाइप हम लोग ने सिल्ट थ्योरीज में स्टडी किए हैं। ओके, एक तो होगा एलुवियल कैनाल, सेकेंड इज नॉन एलुवियल, थर्ड इज रिजिड बाउंड्री। ओके, एलुवियल कैनाल, I have explained this in silt theory chapter। alluvial canal is constructed or excavated in alluvial soils. Non-alluvial canal is excavated in non-alluvial soils, and rigid boundary canal is nothing but all the line canals are called as the rigid boundary canals. Okay, now last is no, not last, second last is classification based on the discharge and its relative importance in a given network of canal। Okay, classification based on the discharge and its relative importance in the given network of canal। now ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन की, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स, ये जो है ये वाटर रिसोर्स वन में एक डायग्राम है। उस डायग्राम के मुताबिक एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। मेन कैनाल क्या होता है कि जो आई होप यू रिकॉल दिस, मेन कैनाल क्या है कि रिवर में से जो डायरेक्टली हम लोग डाइवर्ट करने वाले हैं, दैट कैनाल इज मेन कैनाल। जो भी रिवर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, दैट इज योर मेन कैनाल। ओके, ब्रांच कैनाल क्या होगा कि मेन कैनाल से जो भी आपका डाइवर्जन आप प्रोवाइड करेंगे, दैट इज योर ब्रांच कैनाल। ओके, ब्रांच कैनाल को जो भी डिवर्जन होगा, दैट इज योर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, एंड द डाइवर्जन टू मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी इज योर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, एंड जो भी इरिगेशन फील्ड है, इरिगेशन फील्ड का स्टार्टिंग एंड the end point of your channel system is your water course। ओके, मतलब जो फील्ड में से जो चैनल होगा, फील्ड का जो चैनल होगा, इरिगेशन फील्ड में जो भी चैनल होगा, दैट चैनल इज योर वाटर कोर्स। ओके, दिस इज समहाउ इजी, दिस network of canal is easy। main canal, that means your canal which carries water directly from the river or a reservoir। Okay, second is branch, branch canals are branches of main canal। Okay,
Major distributaries are the water which are the canals which take off from the branch canal. Okay. Now the minor distributaries take off from the branch canal, and the water course is known as also field canal, is a small channel which ultimately feeds the which ultimately feeds your irrigation field. Okay, this is very simple network connection here. Second is classification based on canal alignment. According to the alignment, canal may be classified as contour canal, watershed canal, side slope canal. Now, the contour canal, watershed canal, and side slope canal. For this, you have to first learn what is canal alignment. Okay, so we'll move further for first canal alignment part. Uh, Sorry for this. O- Okay, we'll first discuss what is canal alignment. Okay, now here in this canal alignment, a canal has to be aligned in such a way that it covers the entire area proposed to be irrigated. ओके, जो भी आपकी अलाइनमेंट होगी कैनाल की, वो किस तरह से होनी चाहिए कि आपका जो भी इरिगेशन एरिया है, इरिगेबल एरिया है, दैट एंटायर एरिया शुड बी कवर्ड. ओके, सो जैसे हम लोग रोड अलाइन करते हैं, वैसे ही हम लोग को क्या अलाइन करना है, ये कैनाल अलाइन करना है. ओके, only the thing is that you have to take a serious note that you have to think of entire area. Okay, you have to think of entire area which is to be irrigated. Now, अभी ये जो एंटायर एरिया हम लोग इरिगेट करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग उस कैनाल को कैसे भी नहीं अलाइन कर सकते. वी हैव टू टेक अ शॉर्टेस्ट लेंथ. Okay, we have to take a shortest length, and at the same time we have to think of a cost of construction also. Okay, now also the thing is that क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जो होंगे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, दैट क्रॉस ड्रेनेज वर्क शुड बी मिनिमम, बिकॉज क्रॉस ड्रेनेज वर्क अगर कनाल में आ गए तो उसका क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी. ठीक है, और क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स भी आपको कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, कैनाल भी लाइन करना है, कैनाल भी अलाइन करना है. सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जो है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपकी लेंथ भी as possible as to be short. Okay, now shorter length of canal ensures less loss of head due to friction, and smaller loss of discharge due to seepage and evaporation. ओके, अगर हम लोग शॉर्टर लेंथ लेते हैं तो क्या होगा कि वाटर फ्रिक्शन की वजह से जो भी हेड लॉस होगा, वो हेड लॉस कम होगा. क्योंकि शॉर्टर लेंथ में फ्रिक्शन लॉसेस भी क्या होंगे, कम होंगे, एज लेंथ इज स्मॉल. नाउ अगेन जो भी आपका इवेपोरेशन लॉस होगा, सीपेज लॉस होगा, वो भी एज कंपेयर टू लॉन्गर लेंथ कम होगा. ठीक है, सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ पॉइंट दैट canal should be of a shorter length. Okay, now according to this alignment, as we have already explained, according to the canal alignment, canals are classified as ridge canal, contour canal, and side slope canal. Ridge canal, that is your watershed canal. Okay, now here in this diagram they have shown the canal alignment part.
I will zoom this so that you can easily understand this. Okay, here this uh, is your river which is flowing, and at this river weir is provided. Okay, because of this weir we can divert the uh, canals. Now from here the main canal is diverted, which is having a direction of this, and at this point this main canal is again diverted to um, this canal. Okay, now here distributaries are provided. This lines shows the distributor. These are the contours. These lines are the contour lines, because the contours, values of contour is shown here, and against these contours at perpendicular you can see the canals. Distributary canal, side slope canal. Here there is one distributary, here side slope canal is provided, again here distributary is provided. Okay, now I'll explain what is ridge canal. Here ridge canal is also called as your watershed canal. Now this is a line along a watershed and runs for most of its length on a watershed. Okay, watershed means जो भी आपका area है, that area is watershed. Now when a channel is on the watershed, it can command areas on both banks, and hence the large area can be brought under cultivation. Okay, जब भी वाटर शेड मीन्स, मैंने अभी कहा कि वाटर शेड क्या है कि इरिगेबल आपका एरिया जो भी है, दैट एरिया इज वाटर शेड. ओके, अभी वाटर शेड में से अगर आपका कैनाल जा रहा है, दैट कैनाल कैन इरिगेट both sides of it. Okay, so that more area is cultivated and more area will be irrigate. Okay, also no drainage can intersect a watershed, and hence necessity of constructing cross drainage works are eliminated. Okay, here आपकी वाटर शेड में से ही कैनाल जा रहा है, सो कोई भी दूसरा ड्रेनेज वर्क जो भी होगा, दूसरी ड्रेनेज लाइन जो भी होगी, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती, एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का कॉस्ट भी यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेट होगा. ठीक है, नाउ व्हेन द वाटर शेड टेक्स अ वेरी शार्प लूप, द कैनाल शुड बी अलाइन straight to save considerable length. Okay, the area of loop between the watershed and the canal cannot be irrigated by this canal, as there will be higher ground on this side, and some other arrangement has to be made if the irrigation is important in that area. Okay, now the canal checks the drainage of this part, and cross drainage work has provided. Okay, जब भी एक लूप में से वाटरशेड, ये जो भी आपका जो भी वाटरशेड है, when that watershed takes a very sharp loop, तो क्या होगा, आपका कैनाल जो है वो आप स्ट्रेट अलाइन करना पड़ेगा. ओके, तो टू टू सेव कंसिडरेबल आइडल लेंथ. अभी आई शो यू द डायग्राम.
हियर। अभी ये जो आपकी अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट हम लोग ने क्या की है, स्ट्रेट की है यहाँ पे, ठीक है। अभी इस अलाइनमेंट के दोनों साइड पे वाटरशेड हायर हायर वैल्यूज पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इरिगेशन कर नहीं सकते क्योंकि वाटर हायर एलिवेशंस पे फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नाउ द सेकंड इज कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल, a, a channel a line nearly parallel to the contours। अभी जो भी आपका कंटूर कैनाल है, कंटूर कैनाल क्या होगा कि आपके कंटूर के जो वैल्यूज है, दैट वैल्यूज एंड दी कैनाल values are nearly same. That means the canal is nearly parallel to the contours, okay, so it is called as a contour channel. Now here the contour canal can irrigate only one side because the ground level on the other side is quite high, because हम लोग कंटूर को पैरेलल वो डिज़ाइन करने वाले हैं, ओके। तो कंटूर कैनाल जो भी होंगे वो कंटूर कैनाल उसके एक ही बैंक पे इरिगेट कर सकते हैं एरिया, क्योंकि उसके अदर साइड पे हायर वैल्यूज होंगे, एलिवेशंस के वैल्यूज थोड़े हायर होंगे। सो वो एक ही बैंक पे क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। सो कंटूर कैनाल इज समटाइम्स कंस्ट्रक्टेड विथ वन बैंक ओनली, and that is called as a single bank, and when both banks are constructed, that are called as the double bank contour canal. Okay, the contour canal does not follow the same contour all along. To enable the water to flow by gravity, some surface slope is given. The rate at which the canal align alignment leaves one contour and take up another depends upon its surface slope, ओके। जो भी हम लोग सरफेस को स्लोप प्रोवाइड करेंगे, उस दैट स्लोप डिसाइड्स द रेट ऑफ वाटर, ओके। मतलब जो स्लोप होगा उसके हिसाब से ही क्या होगा, उस कनाल में से डिस्चार्ज आएगा। इट इज यूजुअल in highly undulated tracks to carry the channel in deep cutting across the ridges, and in higher embankments across the valleys in order to reduce the unnecessary length of channel in long and sharp curves, okay। that means यहाँ पे जो हाईली अंडुलेटेड ट्रैक्स होंगे, हाईली अंडुलेटेड ट्रैक्स होंगे, वहाँ पे हम लोग डीप कटिंग एंड रीजेस के अलोंग कटिंग वगैरह भी करना पड़ेगा टू एंश्योर दी फ्री फ्लो ऑफ दैट water in the canal, okay। Now second is your side slope canal। Side slope canal, it is the channel align roughly at right angles to the contours of country and is neither on the watershed nor in the valley, ओके। ये जो भी कैनाल्स है, साइड स्लोप कैनाल, डायग्राम में मैंने दिखाए थे, साइड स्लोप कैनाल जो होंगे वो कंटूर लाइंस को परपेंडिकुलर होंगे, एट मीन्स एट दी राइट एंगल्स होंगे, ओके। नाउ द जनरल कंसिडरेशंस फॉर द alignment. First is the alignment of canal should be such as to ensure the most economical way of distributing the water to the land,
as high a command as possible and minimum number of cross drainage works. This is the main consideration. जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज आपका हाई होना चाहिए, सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, एंड आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जो भी है वो मिनिमम होने चाहिए. ठीक है. सेकेंड इज द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल on a watershed being the most economical is preferred. As the general rule, all the watershed lying in a command should be occupied by distributaries. Okay, जो भी आपकी अलाइनमेंट है वाटरशेड में से जो जा रहा है कनाल, that alignment of a canal should be economical, most economical. Okay. And third is the length of main canal from the point where it take off from a river to a point where it mounts on the watershed should be minimum. That means जो भी आपकी मेन कैनाल की लेंथ है, river from river to the watershed, that length should be minimum. Okay. Contour alignment should be changed this way or that way in order to reduce number of cross drainage works. Okay. सेम एज फर्स्ट, कंटूर अलाइनमेंट जो भी होगी वो चेंज कर सकते हैं हम लोग टू मिनिमाइज द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. फिफ्थ इज द अलाइनमेंट शुड अवॉइड विलेजेस, रोड्स, कार ट्रैक्स. ओके, दैट मीन्स आपकी जो भी अलाइनमेंट होगी वो पॉपुलेटेड एरिया में से नहीं आनी चाहिए. The alignment should pass through balanced depth of cutting. Now, जो भी आपकी कटिंग की डेप्थ होगी वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. जहाँ से भी आपकी अलाइनमेंट जा रही है वहाँ पे डेप्थ ऑफ कटिंग शुड बी बैलेंस्ड. ओके, अगर नहीं है तो मिनिमम होनी चाहिए कटिंग की, एंड एट द सेम टाइम फीलिंग की भी जो भी हाइट होगी दैट हाइट शुड बी मिनिमम. ओके, एंड नंबर ऑफ किंग्स एंड एक्यूट कर्व्स शुड बी मिनिमम. यहाँ पे सेम कर्व्स जो भी है वो कर्व्स भी मिनिमम ही होने चाहिए. द सेकेंड इज द अलाइनमेंट शुड नॉट बी मेड ऑफ रॉकी एंड क्रैक्ड स्ट्राटा. ओके, रॉकी स्ट्राटा नहीं होना चाहिए अलाइनमेंट में. एंड नाउ द अलाइनमेंट ऑफ field channel or water course. Okay, that last channel to the irrigation field. Though the maintenance of field canal is responsibility of a farmer, its alignment should be of following features. First is they should be laid along field boundaries. They should be capable of supplying sufficient water, and separate field channel should be provided for high and low lands. The field channel should not pass through rocky and cracked strata. Okay, same, that means जो भी मेंटेनेंस उसका होगा वो मेंटेनेंस फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो उस पर कर्व्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए. हाई एंड लो लैंड्स पे मतलब जो भी आपका है कैनाल दैट शुड बी provided with high and low lands. It should be capable of supplying sufficient water to the far end. Now, second part is inundation canal. Okay, जो भी आपका inundation canal है, as I have explained, inundation canal means जब भी आपका फ्लड आएगा, जो भी और जब भी हाई वाटर लेवल होगी आपके रिजर्वायर में, तभी इन्यूंडेशन कैनाल क्या होगा आपका फुल सप्लाई से फ्लो होगा.
ठीक है. Now, advantages of this inundation canal. Firstly, the cost of construction for inundation canal system is very low because of the absence of headworks. यहाँ पे headworks provide नहीं है, so cost of construction low होगी as compared to perennial canals. Secondly, disadvantages of inundation canal. Sorry, advantages में second part is, since the silt and fine sand find its way into the canal, the water carried by inundation canal system has a good manurial qualities. Okay, that means जो भी silt and fine sand उसमें से फ्लो होंगे, तो जो भी आपका वाटर होगा इन्यूंडेशन कैनाल में फ्लो होने वाला, तो उसके मैन्यूरियल क्वालिटीज़ अच्छी होंगी. ठीक है, दैट मीन्स इट कैन बी मोर प्रोडक्टिव. Since the water supply in canal is intermittent and hence irrigation in particular area is also intermittent. Therefore, there is less trouble of waterlogging and other bad effects of over irrigation. ओके, यहाँ पे ओवर इरिगेशन या फिर वाटर लॉगिंग ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कैनाल का वाटर सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है. Disadvantages: there is no headworks, so head of canal is liable to be washed away during floods. The water supply available from canal is not really reliable, as water is available only during floods. There is no water for irrigation during other season. Okay, duty achieved by inundation canal water is low. ओके, जो भी इन्यूंडेशन कैनाल वाटर है उसमें से जो ड्यूटी अवेलेबल होगी वो लो होगी. इन्यूंडेशन कैनाल इज कॉन्स्टेंटली अंडर सिल्ट ट्रबल, क्योंकि जब फ्लड आएगा तभी ये फ्लो होगा, तो फ्लड वाटर जो होगा उसमें सिल्ट कंटेंट भी ज़्यादा ही होगा. ओके, and the cross section of canal is not well defined, so it is very rough handling of water in the inundation canal. Okay, so these are some types of canal system, classification of canal. In next video we will stop here for this. In next video we will study the canal losses and waterlogging, canal lining, etc. Thank you.